I would like to extend a warm welcome to Daud sir, Sazia ma'am, Faisal sir, Joyce ma'am, our pillar of support, Christina ma'am, as well as to all my colleagues, my young children, my students. I would like to extend a warm welcome to all of our parents who have joined us today for the first parent orientation program of the academic year 2023-24. Myself, Annie, and I am from Pune. And I'm teaching science in Golden Sparrow Hub School since 2021 and having a wonderful time working here. On behalf of Golden Sparrow team, I extend my humble gratitude to all the parents who have joined us here. As your child's teacher, it brings me a great joy to have you all here and embark on this exciting journey together of the academic year 2023-24. So, my dear parents, relax for yourself. And now we have all my team coming up with their lovely thoughts to share with all of you and give us a short glimpse on the current academic year. Now, I call upon Mrs. Joyce, the principal of Golden Sparrow Hub School, an epitome of sheer hard work, loves honesty, and dedication. She is from Mumbai and also a business study teacher in Golden Sparrow Hub School. We welcome you to the platform, ma'am. The floor is all yours. Thank you, Annie ma'am, for such a lovely introduction. So, good evening, distinguished guests, our dear directors, wonderful parents, my colleagues, and my dear little students. A very warm welcome to all our parents once more to this esteemed parent orientation program for the advent of the academic year 23-24. Today, I stand before you as the principal of this venerable institution filled with immeasurable pride and joy. I express my profound gratitude for the privilege to address this gathering of devoted parents, talented students, and passionate educators. From the humble beginning to scaling up new heights, we have covered different milestones in the new journey. The education from my home to your home, catering needs of kids with high quality education around the globe. It is today known as one of the most demanded schools in the sector of online, a bench with academic excellence and also a center that creates responsible citizens. We are very grateful to our honorable directors. It is because of their valuable guidance and encouragement has all been possible. Today, Golden Sparrow School has become a dream destination for many. I wish to celebrate this success by expressing my gratitude to the Golden Sparrow heads, whose vision, wisdom, and missionary zeal inspired everyone to work together with compassion and commitment. We thank all the team, parents with gratitude to build this step of edifice, the third year of Golden Sparrow School. The progress of any institution depends on a committed faculty, staff, a large pool of resources, responsive students, cooperative parents. We are very lucky to have all these elements. Allow me to share my screen. Give me a minute. Yeah, my screen is visible, right? Yes, yes. Okay, thank you. So, before we dwell into enthralling prospects of the forthcoming academic year, I would like to share a story on a typical day at school. The English instructor visited the class of grade 9 students. Okay. Following the earlier routine chats, she posed a query to all the kids. What do you want to become when you grow up? If I were to tell you, children, as usual, had great responses. Some said engineer, some said officer, some said doctor.
All of them were eagerly hopping out of their seats to respond. However, one student was completely silent, and the teacher assumed that he was lost in thought as he might have not understood the question. Now the teacher asked him, "Dear youngster, did you understand my question? Why didn't you tell me what you wanted to be when you grow up?" The child answered, "Yes, ma'am, I did understand the question and I know the answer. I wanted to tell you that it is just I want to be happy." Quite amused by the answer, the teacher said, "Probably you didn't understand what I asked." The child answers, "No, ma'am, you didn't understand life and therefore you don't get me." Can anyone guess that young man? Can anybody, give the guesses out? He's none other than John Lennon. Today, in between the rat race of competitions, may it be the education sector or work, we often tend to forget to check on our kids. If they are happy or are they enjoying their childhood along with learning? Yes, dear parents, we are that set of parents who checks if our child is happy. Let me tell you again, yes, and that is why we are here, parents in Golden Sparrow. I welcome you all to the tribe of Golden Sparrow, where we focus on our students to be happy. Our vision itself speaks our mind. We create happy children, happy minds, and happy learning. Well, our children will join us on 19th and 20th of June respectively at 10 a.m. I believe the routine has been shared with all of you. If in case anybody has missed it out, request you to please reach out and we are always there to help you out. Let me take you to the back end work, what our teachers were into these many days. I would like to extend my heartfelt appreciations and admiration for the invaluable endeavors of our extraordinary teaching staff. Over the recent months, our teachers have been fully immersed in comprehensive training programs dedicated to refining their pedagogical methodologies, acquainting themselves with the latest technological terminologies, life problems, curriculum advancements, efficient lesson planning strategies. Right from curriculum planning to bridge the course content, well, we did it all. Right from role play to micro teaching methods to bestow an education of highest caliber to our kids. They have wholeheartedly embraced innovative teaching modalities, learned integrating technology into the instructional practices. We harbor unsavoring confidence that our students shall receive the superlative education they deserve, preparing them aptly for the exigencies and opportunities that lie on the horizon. Well, parents, our teachers are really happy and excited and eager to meet their students to create new memories and new moments. When it comes to the child's point of view, we have made all the curriculum planning and done and ready so that in future we are ready with all our syllabus and the methodology of learning and teaching. Other than the report card, we have made an individualized education plan for each child to customize their needs, identify their shortcomings, and strengthen the areas with remedy methodology. We are happy to say that we focus on all our students' all round development. Just as parenting and teaching are the two sides of same coin, I understand we need your support too. Dear parents,
to function smoothly for the wonderful beginning, all I request you are few points: punctuality and regular attendance. It is really beneficial for our kids and are really important so that we instill the value of time for our sparrows. Attending the sessions regularly goes hand in hand to learn the topics in continuation. Second, to avoid the potential distractions. Kindly ensure your child sits in a place where the child does not get disturbed by the surroundings due to excess distractions, may it be the voice or people dropping into your house. Please see that your child is not disturbed and sit in a quiet, well lit room. Completion of assignments. Unless the child completes his or her extended learning assignments, recapitulation and revision of the topic gets difficult. So I request all our dear parents to make your child write or learn the assignments not as homework, but think it as an extended learning at home. Fourth and the most important one, video on. It is a kind request to all our parents to ensure that the child is live on camera, or to say to keep your videos on during the live classes so that there are no barriers in communication, learning, and teaching. Furthermore, we have meticulously crafted a series of splendid events and activities throughout the academic year with the Odyssey and in tally with SDG goals. These events are artfully devised to foster creativity, collaboration, and profound sense of community among our students, from captivating talent showcases to exhilarating competitions. Our calendar brims with opportunities for our students to manifest their talents and unearth the latent passions. GSH has opened its door for all the sparrows to fly high in the sky for the academic year 23-24. Dear parents, ask your child to read and make the books their best friends for life. But don't make them bookworms. Allow them to bloom in their own sweet time, for every child is special. Let them have the time for childhood memories to create and make. Let them trip, skid, and fall from the bicycle rides. For they will only remember the bicycle rides and not remember the wounds. Let all our students learn to live the life happily. Dear parents, now allow me to address our cherished students for all the grades. My dear little ones, once you embark on your journey with new milestones, do not worry. As your parents, teachers, and this year extended family Golden Sparrow will always be with you to protect you, guide you, and help you to create a beautiful place for you to sustain and teach to make your way in the years to come. The educational journey of coming to the first day of school, from learning rhymes, stories, to exploration of science, intricacies of language, and numerical operations, you have done it all. From our LKG to grade 12, I welcome you all, dear kids. To the class of grade 10, class of 23-24, as we commence this pivotal year, let us heed the lessons the success of a mere balloon teaches us. To be the highest up in the air, the balloon is not determined by its color or shape, but rather the substance we fill it with. Will it be a mere gas or a helium gas?
Now that depends upon you. Knowledge is power. It will lead you to fly. Let us fill our minds with ethereal gas of knowledge and gain wisdom. Therefore, my dear grade 10 students, rest assured all your parents and teachers are there by your side. Along with filling your balloons with knowledge, try to capture lot of memories, cherish reasons for happiness. For school days are the best of the years, my dear kids. On behalf of Golden Sparrow Institution, along with our esteemed team, our honorable directors, and our passionate faculty, I extend a heartfelt welcome to each and every of our students. Pre-primary, primary, middle school, secondary, and senior secondary students for the academic year 23-24, we welcome you all. Thank you, dear parents who have joined us and given a lot of trust. I pray and wish we have lovely academic year 23-24. May you all enjoy a prosperous and a gratifying academic year ahead. The woods are lovely, dark and deep, and miles to go before I sleep. Robert Frost. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was really informative, and I'm sure that all our parents might be now looking forward to have an informative, fun-filled academic year. Now, I call upon Mrs. Noor Jahan ma'am to the platform for her wonderful thoughts, or rather say, breaking myths of online schooling and clearing the doubts on online school and concern. Calling on Noor Jahan ma'am, she is from Bangalore and an English teacher at Golden Sparrow Hub School. Over to you, Noor Jahan ma'am. Thank you so much, Annie ma'am. Are you unsure about starting an online schooling because it pulls the strings loose from socializing with friends and fellow classmates? Or lacks support from the faculty like at physical schools? Or even too much screen time? Today, I stand before you to address the same concerns and break the prevailing myths surrounding online schooling. Good evening, everyone. As we navigate the digital realm of education, it is essential to dispel the misconceptions and throw light on the incredible opportunities online schooling brings to our children's lives. First things first, of our most of us parents concerned about the screen time. It is true that online schooling involves the use of digital devices. However, it is important to recognize that technology has become an integral part of our daily lives. Google Classrooms do not use too much of pixels as its live classes, unlike any animation movies or cartoon shows where the background frequencies change a continuous motion of characters. So, through online platforms, we can provide our students with interactive and engaging educational experiences that cater to the individual needs. However, as educators, we actively monitored and implemented strategies to ensure balanced screen time. We will be having eyes off screen time, which will be allowing our students to off their screens and indulge in certain activities, maybe like a scavenger hunt or thinking caps. Combining synchronous and asynchronous learning activities to maintain a healthy learning environment. Another common myth we at online schoolings hamper social interaction. Physical proximity is limited, and that is true. And that is why digital landscapes open up new avenues for students to connect and collaborate with their peers. Virtual classrooms provide platforms for discussions, group projects, and online forums where students can interact, share ideas, and develop important social skills. We have had guest lectures coming in to have interaction with our students, and this year we have had an add on. That's a chit chat session. Here,
We let our students to freely interact with their peers, exchange ideas and thoughts, discuss and debate, and all of this with or without the interference of the teacher. But yes, monitoring will be done to overcome any unforeseen events. Online schooling encourages students to connect with their communities outside, fostering a sense of global awareness and cultural understanding. Lastly, it's important to debunk the notion that learning happens only within the four walls of the physical school. Let's see how many of us prefer to watch a favorite sport, be it cricket or football, at the stadium. Although we are at the stadium watching the play, can we really see the expressions or the emotions of the player? And yes, not to forget, we are lost in the huge crowd as well. But then, watching a match back at the comfort of your home, you get to see everything, the player's defense or his play. And that is how, my friend, how online platform enables both students and teachers. I'm sorry. Yeah, both students and teachers to be completely under observation. So there is one attention given to each individual student and a maximum ratio of 1 is to 15. That means we have only one teacher for 15 students here, which is as against 1 is to 40 students at the physical schools. And there is a personal attention which is beyond expectations. With vast array of online learning, students in depth caters to their unique interests and learning styles. This personalized learning encourages our students to become independent and self directed learners. Parents, please understand that online schooling is not mere substitute for physical schools, but rather it expands the horizons of education. It offers our children the opportunity to learn in the way that aligns with the demand of the digital age and prepares them for the challenges of the future. As teachers, we are committed to ensuring that our students receive a well rounded education, that one that integrates technology, social interaction, and personalized learning experiences. In conclusion, let's break the myth surrounding online schooling and embrace the potentials it holds. Together, we can create an educational environment that nurtures the intellectual, social, and emotional growth of our children. By embracing technology, fostering social connections, and recognizing the vast possibilities online schooling offers, we can provide our students with an education that prepares them to thrive in the ever evolving world. Thank you for your attention, and let's work hand in hand to shape a brighter future for our children. Wow, it was so informative to know that at Golden Sparrow Hub School, the team has inculcated lots of things in the online school, keeping the benefits of children in their mind and unlocking few myths or say concern from our mind. Thank you so much, Noor Jahan ma'am. Now, I would like to welcome the founder, the whole soul of Golden Sparrow, with his vision and uncompared dedication, has teach Golden Sparrow Hub to know new horizon. Hats off to this wonderful man. He is often addressed as a person with golden heart. Can you all guess who is he? Well, I think he doesn't need any introduction. None other than Daud sir. Dr. Daud West, sir, is a mindset coach, an educationist, quizzer, edupreneur, a patent attorney, and a person with gold heart. An electronic engineer, MA in education, and an MBA. He left his lavish career as a patent attorney in Switzerland, Moscow, and Dubai to work on SDG global goals and skill workshop. He has authored the education riddle. He is the academic director of the Sustainable Academic Golden Sparrow Hub School headquarters at Navi Mumbai. He has also worked on Forum for Creative Education,
panelist at IIT and designed life skills curriculum for K-12 school. He is a vivid reader and a writer to many articles. Well, I can go on and on talking about him as he is an inspiration to all of us. So, ladies and gentlemen, please welcome Dr. Daud Bed, sir. Over to you, sir. Thank you so much, Annie ma'am. Very good evening, everybody. It's so nice to see Annie ma'am. Thank you so much. इतना लंबा पढ़े. I will definitely recommend your name for the next bonus. Principal भी यही है, सुन रही हैं आपकी बात. I wish इतनी तारीफ मेरी स्कूल में होती मेरे टीचर्स के सामने. बीवी के सामने कितनी भी तारीफ करो कोई सुनता नहीं है. But I'm so glad all of you parents. This is our show. We have been doing a lot of events every Sunday. Some of you have been attending the webinars. We've been doing some programs across. But when I come to this event, this is a very personal event. It is the Golden Sparrow Hub Schooling's own session, our own orientation. ये हमारा program है, and you are the parents who believed in us. So for that, तहे दिल से आपका शुक्रिया. Thank you so much. I welcome each and every one of you for being a part, because you are what makes Golden Sparrow. You have trusted us with your children. आपने भरोसा किया, and it's a big responsibility. Trust me, when I was working in corporate में जब आप काम करते हैं तो आप एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं. कोई चीज अच्छी नहीं हुई, कोई प्रोडक्ट काम नहीं चला, कोई सर्विस नहीं हुई, you always can go back and you can change. 6 महीने बाद वारंटी में आ जाते हैं, and we can go back and say, okay, I will remove this, I will change the product. In education, the world changes. ये वो चीज नहीं है, ये वो सर्विस इंडस्ट्री नहीं है, ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है, ये लाइफ है. एंड देन मुझे कभी कभी ये एहसास होता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने ली है. शायद कॉर्पोरेट लाइफ मेरी अच्छी थी, बट देन आप लोग जब इतना ट्रस्ट करते हैं, व्हेन आई मीट इंडिविजुअल पेरेंट्स, व्हेन यू हैव वॉक डाउन टू द ऑफिसेस, आपने कॉल किया है, एंड आई होप आई वाज एबल टू टेंड टू मोस्ट ऑफ योर आंसर्स एंड क्वेश्चंस. नॉट जस्ट मी, माय टीम. ट्रस्ट मी, it makes every part of it worthwhile. Today I was speaking to somebody and I said, I chose to leave the corporate world. I was a patent attorney to come to India and work in education, and I don't regret the decision at all. Yeah, there are days when you scratch your head, बहुत काम करना पड़ता है. How do I convince the parent? Questions आते हैं NIS के बारे में. एक news article आया, and I've been replying. I've been working on petitions. But then we say it's worth it because we are changing lives. आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद भी नहीं, 5 साल 10 साल बाद ये बच्चे जब कुछ बनेंगे, ये आइडियाज जो हम उनको दे रहे हैं, trust me, it will be worth every inch of the time we're spending, every minute we're spending. So once again, thank you so much, and I'm so glad that I'm here with you. मुझे भी डर लगा और आपको डर लगा है. प्रिंसिपल की हम बात सुन रहे थे, and when principal speaks, थोड़ा I was also attentive कि मैम क्या बोलने वाले हैं, कहाँ हमको she will. But I'm so glad what Joyce ma'am has created the team, and literally ऑनलाइन स्कूल में ये एडवांटेज है कि आप उससे छुटकारा नहीं पाते हो. घर में आप भी सुनते रहते हैं, राइट? लिटरली एवरी सिंगल डे आई वुड हियर शाजिया मैम, जॉयस मैम टॉक अबाउट इट. कब मीटिंग करनी है, और आज जो हम सुन रहे हैं और मंडे से जो क्लास चलने वाली है, द सीड्स ऑफ द क्लास हैव बीन सोन ऑलमोस्ट 2 months बैक. 2 महीने से प्लानिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है. ईच ऑफ द टीम आउट हियर, व्हाट यू हर्ड is just the tip of the iceberg. There's some amazing teachers, and that is my strength. मेरी जो ताकत है, इनफैक्ट हमारे पास शक्ति मैम है, राइट? और मैं इसीलिए उनको सोचता हूँ मैं शक्तिमान हो गया मैम अगर आ गए तो. वी हैव हायर्ड, शायद वही नाम सोच के हमने हायर किया है, राइट? वी हैव गॉट सो मेनी अमेजिंग पीपल. दिस इज द आइडिया दैट वी हैव गॉट. टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस डेमोग्राफिक्स, टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस बोर्ड्स, दे कम बैक एंड गिव अस द एक्सपीरियंस. As you've always seen, सारी चीजें प्रिंसिपल मैम ने कवर कर ली, बाकी जो बचा था नूरजहां मैम ने कवर कर लिया. इसीलिए मुझे आखिरी में देते हैं कि सर आप क्वेश्चन आंसर्स आप संभालो, बाकी तो हमने कर लिया. मैं 4 चीजों पे आपसे बात करूंगा, सिंपल प्रैक्टिकल चीजें. मैं उम्मीद करता हूं वो 4 चीजें अगर हम इंप्लीमेंट करें, बिकॉज यू ट्रस्टेड अस, यू ऑलरेडी स्टार्टेड विद अस. तो ये 4 चीजें हैं, हाउ डू वी गेट स्टार्टेड. नंबर 2, Who are my teachers? थोड़े लोग को मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा, थोड़े लोग को आपने अभी देखा, बट ओवर द टाइम यू विल सी देम. आपके घर वो आने वाले हैं, राइट? एवरी डे यू विल सी देम, 4 days a week. You will actually know them better. तीसरी, क्या टूल्स हैं, कैसे सक्सेस पैरामीटर्स हैं, स्पेशली हम जो ये गोल्डन स्पैरो में कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सिंपल टिप्स. और फाइनली ये स्ट्रक्चर्ड करिकुलम जो कहते हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग जो वर्ड यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है. These are 4 simple things, simple goals I have for you.
सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर द डेट. अपने कैलेंडर में बड़ा सा मार्क कर लीजिए कि 19 तारीख से हमारी स्कूल शुरू हो रही है या 20 तारीख से. यू नो, डिपेंडिंग ऑन मंडे और ट्यूसडे वी आर स्टार्टिंग अवर एकेडमी, वी आर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम, वी आर स्टार्टिंग दी हब स्कूलिंग. मैं यूजुअली ऑनलाइन स्कूलिंग वर्ड से रिफ्रेन करता हूं बिकॉज आप एक हब हो. आप अपने घर में भी हो ना, तो ये बच्चों की एक स्कूल है, ये एक प्रोग्राम है. घर को आपने एक स्कूल बना दिया है. बिकॉज हम हमेशा सुनते आते थे ना बचपन से, द पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर, चाइल्ड्स होम इज द फर्स्ट स्कूल. अब हम वो कर रहे हैं. लिटरली दिस होम इज द स्कूल. सो व्हाट डू वी डू नाउ? हम इसको कैसे अच्छा बना सके? सबसे पहले पंक्चुअलिटी. अगर आपने आज भी देखा होगा, अगर हमने आपको 7:30 इंडिया टाइम में प्रॉमिस किया है, तो वी स्टार्टेड ऑन टाइम. टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वक्त की अहमियत जानते हैं. और मैंने कहा ना, ये वक्त चला जाएगा ना, तो ये प्रोडक्ट नहीं है कि 6 महीने बाद आपका बच्चे हमारे पास हम लेके, ओ आई एम सो सॉरी मैम, हमने कुछ गलत पढ़ा दिया, 6 महीने बाद हम रिपीट करते हैं. नहीं, यू हैव ट्रस्टेड अस, वी स्टार्ट द प्रोग्राम ऑन टाइम. स्कूल वी ऑलवेज से लेट बैक, 10 बजे शुरू करते हैं. मेरे स्टूडेंट्स कुवैत में हैं, वो उनके लिए 7:30 बजे हो जाएगा. आप अगर आगे हैं, सिंगापुर में है, तो 10 के आगे हो गए. हम आगे जा रहे हैं. वॉट एवर टाइम यू हैव चोजन, primarily please mark an alarm. I know it may be relaxed, but it is a program, it is a school. You please come on time. हाँ, मुझे बच्चों के पिजामाज अच्छे लगते हैं, पिजामा पार्टी अलग से करने वाले हैं, बट ऑन द डे नाइट सूट में बच्चा आएगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा. आई डोंट वांट अस टू बी ओवरड्रेस्ड. मैं यहाँ कोट और टाई पहन के नहीं आया. आई एम इन अ नाइस शर्ट. आई होप इट्स गुड शर्ट, बट एटलीस्ट वी नो वी वैल्यू यू. आप तो कैमरा नहीं खोलेंगे, ये तो आपने शपथ वाली है, हमको एटलीस्ट आप देख सकते हैं. बट नॉट पिजामाज, नॉट जस्ट एनी शर्ट, नॉट शैबी लुकिंग थिंग, नाइसली ड्रेस्ड. कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है जब मम्मी आके बच्चे को ऑनलाइन स्कूल में नाश्ता देती है. अरे बेटा ये पाव खा लो, तो नाश्ता करा दीजिए, एक घंटा पहले उठा दीजिए. योर एक्साइटमेंट इज अ चाइल्ड एक्साइटमेंट, एंड दिस इज व्हाट वी आस्क यू टू डू. दिस इज ऑल वेरी सिंपल थिंग्स, सिंपल ऑर्डिनरी थिंग्स, बट अगर इसको करेंगे लाइफ में यही चीजें बहुत अच्छी होती है. दूसरा, जहां भी आपका बच्चा बैठा है, wherever the child is sitting, have a clean desk, clutter free desk, a small space, उसके लिए space. I always say invest in small things. आपने एक Amazon से एक बल्ब ले लिया, the standing lamp ले लिया, study lamp. It makes such a big difference for a child. Oh, my parents believe that this is for me to study. वो 4 बार खोल ऑन करेगा, खराब भी कर देगा, वो 2 महीने भी नहीं चलेगी. बट योर फैक्ट दैट यू इन्वेस्टिंग इन समथिंग, it is a sign that you believe in the program. This is my request to you. So let's get started, and let's get started very well. हाँ, आप नाश्ता करा सकते हैं, I don't mind. Right? आप अनफॉर्चुनेटली हमको तो नहीं भेज सकते. बच्चे को बीच में मत कराइएगा, कैमरा ऑफ करके नाश्ता दीजिएगा. अभी भी आपने देखा होगा, अगर मेरी बेटी आगे पीछे जा रही है, डोंट बी एम्बैरेस्ड. वो नीचे से जाती तो भी दिख जाता है, तो मैंने कहा जस्ट गो वॉकिंग. दैट इज द न्यू वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. मैं आपके घर में हूं, आप मेरे घर में. हाँ, अच्छा लगता है, थोड़े बैकग्राउंड बड़ा स्मार्ट लगता है, बट कभी कभी बैकग्राउंड नहीं होता है. वो आवाज आती है, मेड की आवाज आती है, अरे आज लेट आई, आज पता चला, अच्छा पता चला स्वाति मैम में मेड लेट आई है. एक दूसरे की घर की खबर ऐसे ही पता चल जाती है. डू नॉट बी एम्बैरेस्ड, इट्स ओके, वी आर अ फैमिली नाउ. और पता चलता है फैमिली में नोक जोक होती है, कभी आपकी मदर इन लॉ आपको डांट देंगे, हम इग्नोर करेंगे, हम जानबूझ के समझेंगे कि आप हमने नहीं सुना. राइट? अगर आपके हस्बैंड मांगेंगे तो रिकॉर्डिंग जरूर दे देंगे, बट डोंट वरी, वी विल इग्नोर इट अदरवाइज. So this is my first point. Start early, start well, and let's get started. आपका excitement आपके बच्चों का excitement. Number 2, these are the teachers who are your mentors. I always say summary और analysis के बीच में बहुत कुछ हो गया. गोल्डन स्पैरो की शुरुआत शायद मेरे बचपन में हुई थी. मेरी पैदाइश कलकत्ता में हुई है, फिर अंडमान निकोबार में मैं बड़ा हुआ हूँ, चेन्नई में इंजीनियरिंग की है, मैं गुजराती हूँ, दिल्ली में काम किया है मैंने. सिर्फ बॉम्बे वाली लड़की से गलती से प्यार हो गया तो यहाँ आके फंस गया मैं, वरना मैं पूरा ग्लोबल इंडियन हूँ. मेरे डैडी मेरे को शांति निकेतन करके एक जगह है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वो आश्रम था, एंड दैट हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी. आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ ड्रीम स्कूल वेयर इट वाज लाइक शांति निकेतन, एंड आई थिंक गोल्डन स्पैरो इज अ कल्मिनेशन ऑफ दैट ड्रीम. फ्रॉम गुरुदेव आश्रम टू 3 इडियट का आप देख पा रहे हैं, देयर इज अ स्कूटर आउट देयर, to Elon Musk, Tesla. I think I've seen mentors online, offline, थोड़े वक्त मिलने हुआ, उनकी किताबें पढ़ी है. This teachers, ये mentors जो है ना, वो आपके आइडिया शेप करते हैं. आपकी जिंदगी में mentors होंगे.
No, your parents, people, your teachers, they tell ideas, और हमारे बच्चे कभी कभी, और 100% ऐसा होता है, हमारी नहीं सुनते, टीचर की सुनते हैं. आपको रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल हमको रिक्वेस्ट भेजिए. हर रिक्वेस्ट से 500 रुपए लेते हैं. बच्चे का नाश्ता नहीं है तो 500 रुपए, अगर सोता नहीं तो 1000 ले लेंगे हम लोग. If you respect the teachers, your children will respect the teachers. So please, कभी टीचर की कोई गलती हो गई, आप हमको बताइए. Don't hesitate, but you must tell us directly. अगर आप बच्चों के बारे में उनकी रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, trust me, the children will respect the teachers. छोटी सी टीम आपके सामने, बहुत बड़ी टीम है now. Really, I would love to introduce every single one of them, but at least to begin with, you heard Joyce ma'am. That's our principal, Joyce Cleatus. All over the world, corporate world में उन्होंने काम किया है, right? And the best part is she believes in Golden Sparrow. Why? Because her son Ashton is a part of Golden Sparrow Homeschooling. That is what makes difference. So thank you so much again, Joyce ma'am, because not only are you a principal, घर में भी principal होते हैं, मुझे पता नहीं. मैं क्लेटस सर से तो मिल के आया. सर बोलते हैं हाँ सर आपने प्रिंसिपल बना दिया. वो घर में भी प्रिंसिपल है. मैम घर में वाइफ और मदर रही है, बट इट इज सो प्राउड व्हेन यू बिलीव इन द ऑर्गेनाइजेशन. Then you have the academic head, Shazia ma'am. Usually you will not see the shy introvert. एक किताब है सुजन केन की इंट्रोवर्ट, मैंने उनको गिफ्ट किया था और उन्होंने बिलीव किया. बट आई थिंक शी इज बीन अ वंडरफुल कोऑर्डिनेटर. शी इज बीन पुटिंग ऑल द एफर्ट्स एंड आई कैन सी दैट चेंजेस दैट हैज कम इन. Of course, nobody is immune to Christina ma'am, the ever present ma'am around. आपने उनके कॉल्स अटेंड किए, आपने मैसेजेस देखा है, राइट? प्लीज उनको ब्लॉक मत कीजिए. आपका बच्चा जब 10 चला जाएगा तब आप उनको ब्लॉक कर दीजिएगा. She's been, as Annie ma'am said, the backbone of the organization, ever present, so wonderful, so, and the best part is the humility all my team have. We are there, we might make mistakes, but we are there to help you, to serve you. And of course, the amazing Aparna ma'am. Aparna ma'am is an artist. She is a terrarium expert. She is a graphologist. 2 हफ्ते पहले उन्होंने एक पूरा NIS पेंटिंग पे उन्होंने सेशन लिया. हमारी टीचर भी हैं और हमारी हेड भी हैं. This is just the core team that you see right now. उसके पीछे you see Annie ma'am, Noorjahan ma'am, Shakti ma'am, Zaira ma'am. There is a whole world out there. And trust me, when we say women power, that's a women power that we have. And I'm very proud of the team that you see. आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी छोटी सी एक्सपेक्टेशन है, सिंपल सा है. हर टीचर कोई अलग पर्सनालिटी लेके आती है. फैमिली बैकग्राउंड, उनका एक्सेंट अलग होगा, उनका कल्चर अलग होगा, उनका रहन सहन अलग होगा. शायद उनके घर में, एंड हम बॉम्बे में रहते हैं, हमारे घर बहुत छोटे हैं. बॉम्बे वाले हर जगह जगह बनाना जानते हैं. शायद आप कोई नासिक में है, आप चेन्नई में है, आप बैंगलोर में है, यू मे बी लिविंग. रिस्पेक्ट द टीचर स्पेस. शी इज देयर, यू सी एवरीथिंग अराउंड. उनके शायद बच्चे कभी रोएंगे, अलाउ दैट. दैट इज व्हाट अ फैमिली इज. The more you respect उनका culture, उनकी identity, and that is the beauty that we are talking about. This is what sparrows are all about. आपके बच्चे शायद आपके टीचर से 1 साल बाद मिले, possible, शायद ना मिले, but trust me, they will love the teachers because the world has changed. दुनिया बदल गई है. आप ना मिलते हुए भी आप इतना रिस्पेक्ट करेंगे, you will start loving the teachers. And every teacher, साथ साथ in every class we have a shadow teacher, we have an observer. They'll come in between. We have feedback sessions, we have teacher session, and trust me, these are teachers who have chosen to come to Golden Sparrow. थोड़े लोग को हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा प्लीज अपनी स्कूल में मत चले जाइए, प्लीज फिर से फिजिकल स्कूल में मत चले जाइए. हमने प्रॉमिस भी किया, लैपटॉप का दिया नहीं अभी तक हमने. हम उनको आईपैड का प्रॉमिस करते हैं, 2 साल बाद आ जाएंगे इतने प्रॉफिट्स. बट दे हैव चोजन टू कम एंड स्टे विद गोल्डन स्पैरो. And I thank all my team to be as a part of Golden Sparrow, all my teachers for that matter. Thank you so much to be part of Golden Sparrow. May God bless you, may you succeed, may you go higher. My prayers, my wishes and my parents' wishes are with you. तीसरी चीज, मैंने कहा 4 चीज मैं आपको बोलूंगा. तीसरी चीज टूल्स. हर प्रोफेशन में टूल्स होते हैं. एक कारपेंटर आपके घर पे आ गया और उसके पास अगर 100 या स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आप उसको भगा देंगे, राइट? द सेम वे एक आर्मी मैन है, आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके पास राइफल हो, बूट्स हो, एक यूनिफॉर्म हो कैमोफ्लेज वाला. हमारे वहां भी अपने बच्चों की सक्सेस के लिए थोड़े टूल्स में हमको इन्वेस्ट करना होगा. We believe that Golden Sparrow also offers economic scholarships. We believe that आप यूनिफॉर्म, आप बस ट्रांसपोर्टेशन, आप टिफिन का भी, कैंटीन का पैसा बचाएंगे. पैसा बचा के अपने पे खर्च मत कीजिएगा. हाँ, ले जाइए बीवी को मालदीव्स और कभी कभी शॉपिंग भी करा दीजिएगा, बट सेव सम मनी एंड इन्वेस्ट इन गुड गैजेट्स. अच्छा मोबाइल फोन और इवन अ लैपटॉप. बर्थडे में हम बहुत कुछ गिफ्ट देते थे बच्चों को.
अगर थोड़ा हम सेव करें, ईएमआई पे ऑफर्स आते हैं, दिवाली में ऑफर आने वाला है, बाय सम गुड टूल्स जो उनकी जिंदगी पर उनको काम आएगा. लैपटॉप्स आर वंडरफुल टू वर्क. कोडिंग होता है, स्क्रैच प्रोग्राम हम करते हैं, गूगल स्लाइड सिखाएंगे उनको. Laptops are great, better than mobile phones. Take one step at a time. Tabs हैं, invest in good gadgets because these gadgets are the main tools of our children. साथ ही साथ मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स. उससे दो फायदा होता है. आपका बच्चा आपकी आवाज से परेशान नहीं होगा. आप 10 बार दूध के लिए आवाज दीजिए, सुनेगा ही नहीं वो, राइट? शायद पता चला आपके हस्बैंड ने भी खरीद लिया, रही तो बहुत अच्छी चीज है, बट फॉर श्योर आपके बच्चे को डिस्टर्बेंस नहीं होगी. ही और शी विल लर्न वेरी वेल. प्लीज स्पेंड सम गुड टाइम and money in these things. इसके साथ साथ I know some of you share a concern, अरे इतनी सारी किताबें, इतना पीडीएफ. I know हम एसडीजी स्कूल है, पीडीएफ हैं, सबको दिए गए, ओपन सोर्स से लिए गए, सो ये आप प्रिंट कर सकते हैं. बट साथ ही साथ हमने ये रियलाइज किया 3 साल, जॉइस मैम ने कहा दिस इज द 3rd year, we've learned, we've made mistakes. we said नहीं, सब चीज ऑनलाइन करेंगे तो बच्चा शाम को जब बैठता है रिवाइज करने, पेरेंट्स डोंट इवन नो व्हाट्स हैपनिंग. तो हमने ये रिक्वेस्ट की, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट कीजिए, ज्यादा खर्चा मत कीजिए, बट फ्रंट एंड बैक कर दीजिए, बट प्लीज हैव नोट्स प्रिंटेड. शायद 500,000 रुपए आपको खर्च होंगे. ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपका. जब बच्चा नोट्स लेके फायदा हो, ये 2 फायदे होते. एक, हम नोट्स में उनको मार्क करने को कहेंगे. नंबर 2, टीचर्स विल से आईज ऑफ. अभी इमीडिएटली आप मुझे देख पा रहे, थोड़े वक्त ऐसा होगा हम कहेंगे ऑल वीडियोज ऑफ, प्लीज फोकस ऑन योर नोट्स. वो नोट्स पे बच्चा देखेगा. लॉट ऑफ पीपल से स्क्रीन टाइम, I've answered that, but anyway, ये वो स्क्रीन नहीं है जैसे आप पठान पिक्चर देख रहे हैं, आरआर देख रहे हैं, सारे एनिमेशन आ रहे हैं. इट्स अ स्टिल स्क्रीन, इट डजंट हार्म यू, बट स्टिल आईज ऑफ इज वंडरफुल. बहुत जरूरी है. आईज ऑफ कहां देखें? नीचे देखें. फिर मैं कहता हूं आप अच्छे से वो फ्लोरेसेंट मार्कर्स होते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए. थोड़ा सा एक पैकेट लेके आइए, बच्चे को मजा भी आएगा. और जब वो मार्क करता है, जब इवनिंग में आप रिवाइज करने बैठेंगे, आप साथ बैठेंगे, trust me, the retention is always very, very powerful. I see my students writing IIT JEE, NEET, CAT exams, doing GRE. I see them growing further. This is a tool you are investing to make it better. Or then there are some notebooks, pen, paper, एक अच्छा सा stand रख दीजिए. I know I'm going a lot overboard, but small things done well will make a big difference in their life. आखिरी चीज टूल्स में जो आप और मैं नहीं करते हैं, मैं स्माइल इसलिए करता हूं, आप अभी मुस्कुरा भी रहे तो मुझे नहीं मालूम, आप शायद साइड में कोई वेब सीरीज देख रहे तो भी मुझे नहीं मालूम. प्लीज इन्वेस्ट इन अ साइड ऑन कैमरा और इन बिल्ड कैमरा. 1200 का 800 से 1200 के अच्छे कैमराज आते हैं. आई हैव अ प्लग इन कैमरा यूएसबी में लगाया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू नो द स्टूडेंट्स. we'll have camera off time, but then exam में we have camera on policies. Please invest in small things. ये tools आप अच्छे से रखेंगे and they are lifetime tools. They are tools that will always benefit your children, and I hope these are simple things. I'll share the presentation with you. You can go through that, and if I miss something, you can share in the feedback form. This is how an idea shapes up. हमारी क्लास में हम बिगिनिंग, मिडिल और एंड रखते हैं. एक छोटा सा टाइम होता है जब उनको कहते हैं कि फोकस मत लूज करो. 15 मिनट वो अच्छे से थ्योरी सुनते हैं, फिर कोई गेम, एक एक्टिविटी, रिडल, पजल होता है. हम ब्रेक लेते हैं. हम इमीडिएट टीचर कहते हैं कम ऑन, आईज ऑफ, स्प्लैश योर वाटर, ड्रिंक वाटर एंड कम. एक छोटा सा ग्लास, एक छोटी सी पानी की बोतल. थिंक दे आर डूइंग अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग. 2 या 3 घंटे जो पढ़ते हैं उसमें ब्रेक्स होंगे, उसमें मजा आएगा, उसमें गेम्स होंगे, उसमें गेस्ट आएंगे. बट अगर आप थोड़ा एफर्ट डालेंगे, योर चाइल्ड विल लव द आइडिया ऑफ फोकस लर्निंग. इसको पोमेडोनेट टेक्निक कहते हैं. they will learn, they will know how to learn. It'll help them further in life. It will really help them in life. I hope we're doing good on time. आखिरी चीज, what do we do? So we have a structured curriculum. जो टाइम टेबल बनाया गया है, बहुत टाइम टेबल बनाना, ट्रस्ट मी, इट्स लाइक जिग्सॉ पजल खेलते हैं. इट्स लाइक दैट, लेबिरिंथ. यहाँ ये टीचर को डालो, यहाँ नहीं, यहाँ. इट इज अमेजिंग टास्क. आई अप्रिशिएट ऑल द टीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड जो टाइम टेबल बनाते हैं. अब मुझे पता चला वो एक्स और वाई गेम जो हम खेलते थे ना, एक्स एंड जीरो, कितना जरूरी है. ये टाइम टेबल में वो काम आता है, राइट? सो टाइम टेबल हैज बीन सेट. फॉलो देम. आप व्हाट्सएप में, गूगल ड्राइव में, गूगल स्ट्रीम में, गूगल क्लासरूम से छोटी छोटी इसके लेसन्स होंगे, इसके ट्रेनिंग हम देंगे. प्लीज अटेंड देम, बिकॉज द मोमेंट यू आर कंफर्टेबल विद गूगल फॉर एजुकेशन, गूगल मीट और गूगल क्लासरूम्स, ट्रस्ट मी, यू हैव डन 90% ऑफ वर्क. आपका जो काम है, हम वहां मैसेज देंगे. व्हाट्सएप में क्या होता है, हमने एक मैसेज डाला, सबने थम्स अप डाला, पता चला व्हाट्सएप का मैसेज खत्म हो गया.
इसीलिए गूगल फॉर एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है, गूगल क्लासरूम प्लीज समझिए, बहुत जरूरी है. आपको फायदा होगा, आपके बच्चों को फायदा होगा. हम एवरी मंथ आपको एक कैलेंडर भेजेंगे जहां इवेंट्स होते हैं. यू विल बी शेयर्ड लॉट ऑफ इवेंट्स. वी डिड सम अमेजिंग इवेंट्स लास्ट टाइम. यू विल बी गिवन द इवेंट्स. गेस्ट्स विल बी कमिंग. Doodle artists, lawyers, speakers, army generals, and hopefully your child will have amazing interaction. I promise you one thing. आपके बच्चों को वैसे लोगों से मुलाकात करने मिलेगा. दे विल बी नॉट वर्चुअली, एट नॉट फिजिकली बट वर्चुअली डूइंग हाई फाइव एंड शेकिंग हैंड विद सच अमेजिंग पर्सनालिटीज. वी हैड अ पद्म श्री कम एंड लास्ट ईयर ही रिसीव्ड द मेडल फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर. दे विल सी, मीट देम लाइव. They will not forget this interaction. This is my promise to you. So what else can we do? If you ever travel, and that is exactly what the whole program is about, recordings will be available. I know math, science, कोई arts की recording मांगता नहीं. I'm sorry, Aparna ma'am, right? But we will make sure that you have the recordings available. Give us some time to make playlist. कल recording class खत्म हो गई, आज चाहिए. Give some time to a team. I will honestly ask you to understand. We also starting something called Hub Help. ये एक online tutorial program है. If you want to join them, you can tell. We'll introduce that. And small things like small hub studios की हम कोशिश कर रहे हैं. You know, कोयम्बतूर में एक request आई है. I hope with Arif sir, we're starting something in Bangalore. Kolkata में with Faisal sir. So there will be small in-house events where you can meet. Pune is a lovely place. Bombay is already here. We will have these programs, and that is what makes our entire Golden Sparrow Hub schooling amazing. We look forward to a big. हमारे ख्वाब बहुत बड़े हैं, हमारे सपने बहुत बड़े हैं. हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं और 19th सेंचुरी के टूल्स यूज करते हैं. दिस इज रियल 21st सेंचुरी. वी आर यूजिंग द टूल्स ऑफ 21st सेंचुरी टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ 21st सेंचुरी विद टीचर्स हु बिलीव इन 21st सेंचुरी. सो अगर मार्क्स देने हैं तो 100 और 100 आप मार्क्स दे सकते हैं. स्टार्स देने हैं तो 5 स्टार्स दे सकते हैं. आई प्रे, आई विश all with hope that this would be the most amazing new year for our children. Thank you so much from everybody. ये सोने की चिड़िया है, ये वो चिड़िया है जो उड़ान भरना चाहती है. आसमान खुला है, आपका सपोर्ट चाहिए, and we'll do wonderful. Once again, thank you so much, all of you. I hope we'll start an amazing time. Thank you so much, sir. I'm sure our students and parents are eager to join us from 19th June, just as us to see our students. As we begin this journey together, let us embrace the spirit of partnership, trust, and mutual respect. Together, we can create an environment where your child can flourish, learn, and reach their full potential. Last but not the least, we have come to know the last of the program. I thank each one of you, all parents, who has trusted our team Golden Sparrow Hub School. We pray and wish a lovely academic year to all our students. See you all on 19th June, kids. Bye, good night, take care. Thank you so much, everybody. Thank you, Annie ma'am. If you have any questions or suggestions, you can always put in the group. You can ask us. We'll wait for a couple of minutes and then we'll end the session. All right. Thank you, everyone. See you next week with all the tools that we said. Thank you once again, everybody. Bye bye. Good night, wherever you are. Bye. Good night, everyone.